गाइस इस क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन की ये बात कर रहा है. पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज शोन. वी इन एज अ इनपुट वोल्टेज के तौर पे दिया हुआ है. सर्किट शो नहीं कर रहा, सिर्फ इनपुट से बता रहा है. एक कैपेसिटर लगा हुआ है और फिर एक वी आउट पे रजिस्टर लगा हुआ है. एक मिसिंग कंपोनेंट है. द सर्किट इज यूज टू प्रोड्यूस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. यहाँ कहीं सर्किट लगा हुआ होगा जो कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दैट इज़ फॉर द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. ऑलराइट, तो वी इन जो है वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है. रेक्टिफाइड सर्किट बनाना है. आउटपुट 14 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस मिल रहा है. अ कंपोनेंट इज मिसिंग फ्रॉम द सर्किट इन फिगर 5.1 ही हैज मेंशन. So complete the circuit diagram in figure 5.1 by adding the circuit symbol for the missing component. Half wave rectification की क्योंकि ये बात कर रहा है. So in that case we need a diode to be drawn, right? And diode to be drawn with a proper symbol and connect it with the external circuit here. Alright. So इस तरीके से हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन अकम्प्लिश कर लेंगे. पार्ट 2. A capacitor C is shown in the circuit of figure 5.1. Agreed. State the effect on V out of including the capacitor in the circuit. अगर V out जो कि आउटपुट रजिस्टर 14 किलो ओम्स के अक्रॉस डेवलप होना है, एक पैरेलल में कैपेसिटर भी लगा दिया जाए और सर्किट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का है, तो कैपेसिटर की वजह से स्मूथनिंग स्टार्ट हो जाती है. सो वी आउट बिकम स्मूथर. Effect on the V out becomes smoother. Okay, now come to part B. Now what is happening at V in? What is happening over here is mentioned in figure 5.2. It is a alternating cycle, and in fact it's a square wave cycle. A square wave cycle with a magnitude labeled over here. If you can read, it's 5 and 7.5. This would be 5.5. Okay, and similarly 5.5 here. So we have altogether 2.5 in between 5. तो हमारे पास 0.25 का एक बॉक्स बनेगा. The smallest box would be 0.25. No, sorry, 5.25. Sorry, because it's 5.25, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5. Yeah, it's 5.5. It is 5.5 and 5.5 in the negative scale, on the negative scale. So it means 1 is for 0.5. Okay. Now आगे क्या कह रहा है? V out, which is developing across the output resistor 14 किलो ओम के अक्रॉस जो V out डेवलप होगा उसकी शक्ल इसने ये बनाई है आफ्टर रेक्टिफिकेशन. इट मीन्स क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन थी तो इसने एक साइकिल को रेक्टिफाई किया और उसे स्मूथ कर दिया, और दूसरी साइकिल को उसने, यू कैन सी ओवर हियर, क्लिप कर दिया. तो एक साइकिल स्मूथ हुई है, दूसरी साइकिल क्लिप हो गई है. सो ये पूरा ग्राफ यूँ जा रहा था, टेक्निकली नीचे जाता फिर ऊपर आता फिर यूँ जाता फिर ये ट्रैवल कर रहा है दिस वे ऑन. लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा. कैपेसिटर लगने की वजह से स्मूथनिंग हो रही है, तो नेगेटिव साइकिल्स एलिमिनेट हो रही हैं और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स बच रही हैं. सो नाउ वी हैव दिस शेप. डिटरमिन द फ्रिक्वेंसी फॉर द वी इन. वी इन की फ्रिक्वेंसी की फ़िलहाल बात कर रहा है. तो वी इन पे दोबारा अगर हम जाएँ, लुक एट द ग्राफ, वन पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. एक कंप्लीट वेव हम कब पढ़ेंगे? इमेजिन द ग्राफ इज स्टार्टिंग एट दिस लोकेशन एंड दिस लोकेशन इज रिपीटेड इटसेल्फ ओवर हियर, एंड दिस वुड टेक अ टाइम ऑफ 0.04 seconds. The total time for one cycle is 0.04. Since reference though, since time is 0.04 and frequency is 1 upon time, is going to be 1 upon 0.04, and 1 upon 0.04 is 25 hertz. Finally, is talking about, show that the time constant tau for the discharge of the capacitor through the resistor is 0.038 second.
Now you have to recall the theory for the discharging of a capacitor. If you remember, over here in my notes I have mentioned you during the discharging of a capacitor पार्ट 4 की स्लाइड मैंने आप लोगों के साथ क्लास में शेयर की है. ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर हाउ द वोल्टेज करंट एंड चार्ज बिहेव्स. The discharging during a discharging of a capacitor, if I highlighted this one, voltage, current variation and charge variations all are discussed in this way. ठीक है. So since we are talking about the voltage variation, so we will take this equation where V is equals to V naught exponential minus T upon tau. Tau would be a time constant, which is the RC. T is the time duration in which the discharges occur. V naught is a value of voltage before the discharge and V is the value after discharge. Okay, so now come back to the question. Give a reference over here. Since V is equals to V naught exponential minus T upon tau and he's asking for the tau time constant. Now guys, this is the value of voltage after discharge, this is the value of voltage before discharge, and this is the time of discharge. Now come to the question over here. The time of discharge is here, between here to here, because इस वक्त तक ये voltage यहाँ constant था, इस दौरान discharge हुआ है कैपेसिटर. ठीक है, इसने स्मूथनिंग की है और फिर ये यहाँ पर वापस आ गया है. टाइम फ्रेम कितना है? 0.02 सेकेंड्स का टाइम है. तो इस इक्वेशन के लिए डेटा हमारे पास मौजूद है. T इज इक्वल्स टू 0.02 सेकेंड्स. द वोल्टेज V नॉट इज कमिंग फ्रॉम, अच्छा ये आउटपुट साइकिल है. डू नॉट कन्फ्यूज योर सेल्फ, होल्ड ऑन, डू नॉट कन्फ्यूज योर सेल्फ with this graph where it was an input cycle with the value of 5.5 in the starting. That was an input cycle. अब जो आउटपुट मिला है, आउटपुट में हमारे पास ये वैल्यू हमें रीड करनी है. ओके, सो नाउ इट्स 5 and 7.5. इट मीन्स 10 बॉक्सेस आर 1 2 3 4 5 6 7 and 9. 10 बॉक्सेस आर अप टू 2.5. 2.5 पे 10 बॉक्सेस हैं. ठीक है, तो 0.25 का आपके पास एक बॉक्स हो गया. 2.5 डिवाइड बाई 10 कर दो तो 0.25. तो दैट्स 0.25, 5.25 एंड दैट्स गोना बी, इसने स्केलिंग को चेंज किया है 5.5. और आफ्टर डिस्चार्ज वैल्यू कहाँ तक जा रही है गाइज? लुक एट दिस वन. 2.5, 0.25 का अगर एक है तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3.25. ओके, 3.25, 5.5 and 3.25. So now V naught 5.5 volt, V is 3.25 volt. use it in a equation. तो 3.25 divided by V naught को यहाँ ले जाते हैं. 5 is equals to exponential minus का 0.02 divided by tau. Since there is an exponential sign, taking natural log on both sides, so we are left with ln 3.25 divided by 5.5 and this will become equal to minus 0.02 divided by tau. Use your scientific calculator and get the value of tau, which is coming 0.038 seconds, hence proved. Now calculate the capacitance of C. Next part, give a unit for your answer. Since tau is also referred as RC, one formula for the tau from the graph could be this one. Second formula is product of resistance and capacitance. Now we have tau, we have resistance, so we can get the capacitance by simply making the C subject. That's going to be tau upon R. Tau is 0.03. R was 14 kilo ohms, right? 14,000. Solve कर लो इसको. This is going to be, let me just check the calculator. Yeah, it is 2.7 into 10 की power minus 6 farad. So I can use 2.7 और यूनिट में लिख सकता हूँ माइक्रो फैरड. I can use this unit.
Okay. The last part for the question, the circuit of figure 5.1 is modified so that it produces full wave rectification of an input voltage. Suggest with the reason how V out now varies with time when V in is as shown. Now guys, सिंपल सी बात है, जब पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन थी तो हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो रही थी और रिजल्ट क्या आ रहा था ये आपके सामने है. अब जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगी तो वी आउट क्या है, फर्दर स्मूथ हो जाएगा. नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ द वी इन्स विल बिकम कॉन्स्टेंट और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा एंड इट विल नॉट वेरी विद अकॉर्डिंग टू द टाइम. सो यू शुड राइट ओवर हियर, sorry, V out would have constant voltage, constant magnitude I must say, okay. For both the directions, or V out would not vary with respect to time anymore. That's should be the answer. All right, thank you.